朋友啊，又出事儿了！印度三哥呀，又来了坨大的呀！武器空战啊，这个歼十把这个印度的阵风基本上差点给剃了光头，对吧？然后呢，印度国内呢就一片这个专家出来说，阵风啊打歼十就跟玩儿一样啊。这个印度赢学，大伙儿明白吗？啊，就是最近呢，就是由于这个中国呢，可能是对印度有人告诉我说没有开放签证，这你别担心啊，反正有不少印度人跑到中国去旅游，是吧？那你要按说啊，这三哥看到这个中国和印度这种巨大的差距，他是不是这个自己就应该奋发图强、奋起直追啊？不对。而且是人家这个印度的有一些游客回去以后啊，在他们的这个媒体上就说中国没啥了不起的，上海还不如孟买的郊区呢啊。ऐसा लग रहा है मतलब अपना अपना सा नहीं लग रहा है, इतना अजीब सा ना कभी मुझे किसी कंट्री में नहीं लगा जितना इधर पर लग रहा है। इधर पर थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि मैंने कौन सी अलग दुनिया में आ गए। कभी कभी तो लग रहा है कि भाई वियतनाम का ना ई वीजा कटवाओ, चाइना से डायरेक्ट वियतनाम निकलो। चाइना जब से हमें दिमाग खराब चल रहा है भाई चाइना यार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा भाई, मतलब लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा है ना, लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या पता मैं उन्हें चाइनीज समझा रहा हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई उन्हें भी चाइनीज आती है। बहुत स्लो स्पीड अपलोड होने में दिक्कत आ रही है, वाईफाई पता नहीं स्लो चल रहा तेज चल रहा। फास्टिंग तक देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। और अब थोड़ा ना चाइना देखूंगा, अब चाइना को अलग तरीके से ट्रैवल करते हैं, लेते हैं मेट्रो ट्रेन जाएगी तो ट्रेन लेंगे, पैसे लगेंगे भाई 3-3 हज़ार रुपये का टिकट होगा ग्वांगजाओ पहुंचने के लिए, फिर ग्वांगजाओ से सांघाई के पैसे मैं नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी। कैसा लग रहा था चाइना से निकल जाऊं भाई, फ्लाइट में डायरेक्ट इंडिया। Here, some of the products are very cheap, but the sustainability of products are very low compared to India. Sir, where are you from? We are from India. India? Yeah. Oh, good. It's your first time to China? Yeah, Okay. Are you here for source products? yeah. We are just started now. We entered now only. What products are you looking for? We are looking for machineries Okay. Yeah. Okay. like CNC, VMC machines products. We are from engineering industry, but here all products are like we can also use them some of products. I have heard Indian boss care more about the price. Yeah. More than everything. No. It's true. It's true. We Indians always looking for a price and good quality products, because here some of the products are very cheap, Yeah. but the sustainability of products are very low compared to India. Indian products are where you can use it for a long time, but China product we will see what things will be going done in the next in future. Okay. The last question. Okay, If Chinese seller want to do business in your country, do you have any good advice? definitely. Or maybe some mistake they should avoid? No, there now I can't tell you what is the mistake, but in India they have many this thing opportunity in India to sell their products for the Chinese. Definitely, India is big country and there are more underdeveloped country, but still you people have a more chance to develop sell the things to India. Okay. I got it. You got a good advice. Okay. What's your name? Sridhar. Sridhar. My name is Jay. Thank you. Thank you so much. 印度三哥晃着他那个小头啊，这个中国货呀，比印度货差远，用不住啊。那问题是印度有没有啊？是吧？哎，我不能告诉你印度有什么坑。对，印度整个的就是一个大坑，印度赚钱，印度花，一分别想赚这个带回家，是吧？这就是典型的印度三哥的样子，好吧？那位说你说了半天，这三哥又来了坨什么大的呀？大伙儿还记得前两天有一新闻吗？说印度在克什米尔地区啊坠毁了一架飞机啊，具体的情况呢一直都没有很清晰，但是随着当地人进入事发区域，发现了部分残骸以后，才基本确定印度空军又来了坨大的。这次坠毁的应该是印度国产的 MK1 型预警机，这种惨烈的损失啊，
也能解释印度政府这2天为什么拼命的封锁消息了。这个最初在印控克什米尔地区呢，出现了明显由飞机坠毁造成的浓烟。巴基斯坦的媒体呢，立刻就做出反应，称是2架印度军用飞机在当天飞过后不久出现了爆炸声，之后才有浓烟。很快呢，进一步爆出了现场的视频，又出现了疑似防空导弹掠过的痕迹，催生了印度的防空导弹误伤民用飞机的猜测。面对这种乱糟糟的局面呢，印度空军始终没有做出正面的回应。之前的那一句没有印度军用飞机坠毁的否认呢，实际上是出自印度退役的军官、电视主持人之口。但经过数天的消息的发酵之后呢，目前才基本确认可能是印度仅有3架的 Mk1 预警机。这款预警机呢，其实跟中国还真有点渊源。早在2004年以色列受美国压力，单方面终止了对中国出口费尔康预警系统以后呢，相应的武器设备被印度的空军看中了。经过7年的努力，原本应该搭载在伊尔76身上飞往中国的费尔康，最终呢成为印度空军第一款预警机 A501I， 最大的监测距离呢约400公里。但是因为国内呢当时只订购了3套，所以印度呢也只拿到了3架A501I， 远不满足要求随仿效中国空军开发空警200与大型的空警2000搭配的模式，提出了发展印度的国产轻型预警机的规划。最终的结果那就是现在的这个坠毁的这一架了。这款印度预警机的硬件布局呢，直接参照大名鼎鼎的瑞典的爱丽眼使用了巴西航空公司生产的 ERJ145 民用客机为平台，原计划搭载印度自己研发的鲲画家相控阵雷达它没有氮化镓。因为性能呢迟迟无法满足需求，最终呢只能从以色列引进了这个模块拼装。传说中的水平呢不俗的印度软件水平，在 Mk1 身上呢并没有得到良好的体现。这款预警机实际上工作的探测距离不足250公里，在印度空军中呢只能作为 A501I 的这个辅助装备使用。2025年18空战呢已经交付3架的 Mk1根本没有发挥作用，而 A501I 与阵风的兼容性并不好，直接导致后者在毫无准备的情况下被击落了。相比之下呢，性能明显逊色的苏30 MKI 因为早早打通了与 A501I 的情报共享体系，成功的获得了预警信息，从而成为当天被击落的有人驾驶的战斗机中唯一成功跳伞的机组。战后呢，印度空军痛定思痛，决心呢解决预警机的短板。具体的办法呢是在 Mk1 的基础上开发进阶的 Mk2 版本，同时呢采购数量也扩大到6架。印度政府呢在当年8月批准了这份预计花费22亿美元的军购方案，而面对现役的 Mk1 进行测试，以出具升级方案，这是项目早期的一部分。这次在克什米尔损失的预警机恐怕就是为了这一点去的，一测试就摔了。然而 Mk1 的问题呢从来不仅仅是雷达的性能严重不足，仅从其这个肩负雷达系统的这种奇葩的结构你就能看到强烈的不稳定性。相比于空警200、爱丽眼这样的应用平衡木结构的优秀的预警机，差距呢是不是一点半点偏偏呢印度空军真就是信心满满，准备大干一场。如今呢新装备的升级尚未全面启动，就先丢掉了1/6的现役核心装备，属于为自己的认知呢付出了代价。哪怕到2026年，预警机呢也不是普通国家能够轻易突破的领域，包括印度仍然深度依赖俄罗斯，也已经停止了新一代的 A100 预警机的研发。
印度既不想继续外购预警机作为核心装备使用，本身又没有足够先进的技术储备，两边摇摆之下，被早就坚定路线的巴基斯坦甩开，那是再正常不过了。巴基斯坦巴铁的那些东西全都是中国成体系的装备，那甩开了三哥啊，不知道有多少架阵风啊，来了坨大的，各位啊，点个订阅吧，咱们下期再聊。